नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते। आरंभ करें सर। या श्योर। हम वंदे जगत गुरुम। पुनरेक बार हमारे सबके आदरणीय सर प्रोफेसर टीपी शशि कुमार महोदय का मैं बहुत बहुत स्वागत आज के 10वें दिवस के तृतीय सत्र में अपने केंद्र श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्ष से और अपने मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर के पक्ष से और सभी प्रतिभागियों के पक्ष से एवं अपनी केंद्र की प्रमुख प्रोफेसर अमिता पांडे के पक्ष से सर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और अभिवंदन करते हैं। आप सब के सर सुपरिचित हैं, आपने पूर्व में भी हम सबका मार्गदर्शन किया है। पुनः आज हम सबको कृतार्थ करने के लिए सर उपस्थित हैं। मैं पुनः सर का यहाँ स्वागत करते हुए निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर हमारे सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन कर हमारे ज्ञान में वृद्धि कर हमें संपोषित करें। पूज्य आदरणीय सर। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सो मच। Pranams to my friend Ramesh Kumar ji and then Ms. Pandey ji for making this happen. And there is a small thing which I wanted to tell you. I like to see the faces, number one. Number two, earlier I spoke about the management and today I'm talking about the leadership. I've changed the sequence. 2 days back, it was management lessons from IKS, and today I'm talking about the leadership lessons from IKS, Bharatiya Indian Knowledge System. The reason is, if I speak about leadership, there is nothing great to talk about management. Actually, management is a lower category and leadership is a higher. So I thought first I will speak about management, then jump into leadership. Suppose if I talk about leadership first, then I'll have nothing to speak about management. खत्म हो जाता है इसलिए. So what is the difference between leadership and management? Leadership is higher, management is lower. What is the difference? Anybody? Anybody who can tell me? I just want to make a dialogue. What is the difference between leadership and management? Why leadership is higher? Or you think leadership is not higher, management is higher? You could tell me. Let us have some dialogue. आचार्य जी प्रणाम करता हूँ जी। किसी भी संगठन को चलाने के लिए जो नेता की दूरदर्शिता है, तो उस दूरदर्शिता का जो विचार है वो नेतृत्व है और उस दूरदर्शिता के अनुरूप कार्य को बैठाना, व्यवस्थित करना, ये मैनेजमेंट है। सही बोला आपने। मैं तो मैनेजमेंट प्रोफेसर था। अभी वी हैव मैनेजमेंट स्कूल्स, मैनेजमेंट कॉलेजेस, दो दे आर ऑल कॉल्ड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। एक्चुअली मैनेजमेंट स्टूडेंट्स नहीं है वो, बिकॉज द डिग्री विच दे गेट इज कॉल्ड MBA। उसमें मैनेजमेंट टर्म नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन है टर्मिनोलॉजी। सो मेरा बुक में लिखा है मैनेजमेंट इज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन, MBA इज नॉट मैनेजमेंट, कलेक्टर इज नॉट ए मैनेजर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, कलेक्टर इज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। सो मैनेजमेंट, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद लीडरशिप। सी मैनेजर रन्स द शो, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते हैं? There is a flood, there is a place which is not managed well, उसके लिए पैसा चाहिए। So what is collector's job? From the leadership get money, after getting money, with that money manage things, that is manager's job। पहले इंडिया में अकाउंट्स कंट्रोलर था। कंट्रोलर का क्या था? डोंट स्पेंड मनी, कंजूस रहना है, पैसा खर्च नहीं करना। हाउ मच आप बचा हुआ है वो ही इज ए कंट्रोलर। बेस्ट कंट्रोलर मीन्स डोंट कंट्रोल। रेशन इज ए कंट्रोलिंग, डोंट गिव एनीथिंग।
Manager with the resource, do the job. Administrator, pull the resource, do the job. Leader, plan. So leader के लिए he has to be inspiring, he has to be guiding, he has to set example, he has to be compassionate, he has to have wisdom, he has to have vision. But manager can be very strict. Dharma, righteousness, वो पूरा करना हमारा काम है. Now we have a great United Nations program 2015 से 2030 तक चल रहा हो. वो क्या है? Anybody? A big program. Sustainable Development Goals. Yeah, Sustainable Development Goals. SDG बोलता है. मैं उसके बारे में एक SDG बुक लिखा है. वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है, सनातन धर्म गोल. सर लिंक शेयर कर दीजिएगा, हम भी पढ़ लेंगे, मंगा लेंगे सर इसको. इट्स ऑल अवेलेबल. आप ढूंढ लीजिए DrTPS बुक्स, आपको सब मिलेगा. आइदर फ्री फ्रॉम माय वेबसाइट और मे बी Amazon, कहीं भी होगा ये बुक्स. सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज ओनली ए टेम्पररी 2015 to 2030. पहले UNDP था, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, बाद में SDG हो गया. बट हमारा सनातन धर्म गोल्स परमानेंट है, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा. सो सनातन धर्म गोल वो भी SDG है. सो इसलिए SDG बहुत पॉपुलर हो गया. मैं एक बुक लिखा SDG के बारे में. सब लोग सोचा मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में लिख रहा हूं. नहीं, सनातन धर्म गोल्स. सनातन धर्म गोल्स का गोल क्या है? एवरीबडी शुड बी वेरी गुड. All our scriptures, Rama क्या बोला है? रामा ने, he is a man of Sanatana Dharma goals, practical Sanatana Dharma, which has got humanity, integrity, justice, righteousness, moral compassion. आप सनातन धर्म गोल में देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे वही, everybody gets good education, righteousness, dharma, management. Management is how do you practice it? Practical aspect. Doing, get the resource, efficiently use the resources. Getting resource, administration. Management, using the resource. So, Upanishad mantra, we have a beautiful management lesson. Bhagavad Gita, we have management lessons. वो सब हमने देख लिया है. But now the mythology talks about both leadership and management. बोथ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. वो टाइटल तो सही दिया, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम इंडियन नॉलेज सिस्टम, बट वो अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है, स्कोप भी अलग है. सो लीडरशिप ऑलवेज फोकस अबाउट विजन, धर्मा, एथिक्स, गाइडिंग अदर्स थ्रू द धर्मा. वो लीडरशिप है. एंड ही कैन सी, आई कैन बी विद द पीपल, थिंक बियॉन्ड द पीपल. Vivekananda was a great leader. He was with the people, but he thought beyond the people, ahead of them, all of them. Krishna was ahead of them. Now, management is how to organize, how to optimize, how to make everybody happy, practical outcome. That is management. I was a professor of management, and my subject is knowledge management. My subject PhD is knowledge management, was my thesis for the MBA. ISRO, मैं ISRO पे था. So how ISRO maintains knowledge management was my paper which I wrote for IEEE. It was accepted. What is Chanakya? Chanakya has a leadership, he has a management, and he knows how to manage resources. ISRO में भी हमारे पास एक मैनेजमेंट सिस्टम है, नेशनल नेचुरल मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, NNRMS. How to the natural resources, how earth has to be used properly. So leadership cannot increase the earth. India का boundary extension नहीं कर सकते, but उसमें how to improve product, how to make the GDP greater, that we can plan. That needs a good leadership. So it is to be really understood what is the difference. So हम day first day क्या किया था, वो मैनेजमेंट था. अभी क्या करने वाला है, वो लीडरशिप है. लीडरशिप इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सत्य धर्म सेवा, ऑलवेज सत्य धर्म सेवा.
What is Satya? Truthful. Dharma, righteousness. For major community, not for everybody. Major righteous people, righteousness. Seva, service. This is what the Indian philosophy, this is what Indian leadership. So how do Bhagavad Gita leads to this? That is what we have seen last time also. So when I quote leadership, definitely management bhi aa jata usme. It is not management, but a manager also can become a leader. A leader can also become a manager. Practically kar sakte. But every thinking what the leader has need not to become practical. Sometimes it is theoretical. आज नहीं हो सकता है तो कल हो सकता है. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं जगत्या जगत तेन तक्तेन भुंजिता. सब लोग खट्टे करके एक साथ बैठ के खाना है, पढ़ना है, बट दैट इज अ विजन. हो सकता है, ये नो हो सकता है, इसे कैसे मालूम है? इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन अलग अलग होता है. इंडियन नॉलेज सिस्टम हाउ टू इंप्रूव, लीडरशिप ने डिसाइड किया. ईच कॉलेज विल हैव a different style. So each manager has to be good. Under him all the managers are good, the leader becomes so successful. Managers ठीक नहीं है तो leader fail हो जाता है एक बार. Prime Minister is good, all ministers have to be good. Otherwise it becomes failure, right? So leadership is, you can have examples. That is why last time also we have seen Janaka was a great leader. Example तो देख लिया हमने. So Ramayana time पे who was there? He was also quoted in Treta Yuga. A great leader was quoted by people in Dwapara Yuga also. That is because they stay not for few years, they will stay for longer time. Leaders stay for longer time. Managers को ज्यादा दिन नहीं रख सकते क्योंकि वो छोटा काम करते हैं. बड़ा काम कौन करते हैं? लीडर्स करते हैं. So Satya, Rama was a Satya Purusha, धार्मिक पुरुष. 10 points. Today I am covering 10 points. उसका भी notes बना के मैं भेज दिया already. Leaders by example. Satya, truthfulness. A leader demonstrates always values. He is a man of value. Manager need not be a value because he works under somebody else. उसका value नहीं है. वो पैसा के लिए, काम के लिए काम कर रहा है. Dharma comes from the leadership. वो manager, when he raised to a leadership, he defines his own value system. When you are a manager, you are supposed to implement what the leader tells you. Okay, so you can run your own company. I can also make a manager to run my company. ऐसा है. मेरा value system मैं implement कर रहा है तो मैं leader हो जाए, मैं manager भी हूँ. Rama was a great man with great leadership, righteousness, dharma, everything was prevailed there. That is what we have seen as an example. Last time, Bhagavad Gita, Karma Yoga 20 and 20 verse. Karmanyeva hi samsiddham astida janakadaya loga sangrahame vapi sampashyan kartumarhasi yadyada jaradisreshta tattadevetarojana sayat pramanam gurute lokastadanuvartate. By performing the duties, that means you are a manager. The king Janaka, he was a leader. So manager भी आ रहा है, leader भी आ रहा है. Attain the perfection. Perfection is righteousness. सेवा कर रहा हो. And you are dedicated to yourself. Passion है आप करने के लिए. And you should also perform your work. Manager का काम है वो. Who is set to the work? Leader ने. Who is that leader? Krishna here. For what? For the betterment of the world. Betterment of the world. Kaurava Paksha and Pandava Paksha. दोनों सही managers था. But leaders on Kaurava side, leader was bad. He was blind man. The Kaurava leader was a blind man. And when the leader is blind, what is his wife supposed to do? Wife is supposed to open the eyes. No. When my husband is blind, wife is supposed to open the eye and help the husband. इधर क्या किया wife ने? Wife also became blind. So both father and mother become blind. What is the result? Children will become bad. उसको गाइड करने के लिए कोई भी नहीं रहता.
And what will happen? Both husband and wife is in darkness, they will produce 100 children. And when wife is totally, mother is totally, vision is there, support with whom? A great visionary, Krishna. So mother, great visionary Krishna, only 5 people are good enough. They can change the world. That is leadership. So they studied in same school, same college, same university. Same professor taught both Kaurava and Pandava. So it is not a professor who can change people. They took birth in same family. So family cannot change people. So कौन change करेगा? You have a leader with you with a vision, they can change people. But if leader is not correct, you need a good advisor. Mentor चाहिए आपको. अभी कौन है mentor? Choosing best mentor is leader's vision. A leader has to be good visionary. अभी धृतराष्ट्र के पास दुर्योधना को मेंटर करने के लिए कौन आया? शकुनी आया. शकुनी कहां से है? शकुनी इज फ्रॉम गांधार नरेश, कंदहार, अफगानिस्तान से लेके आया. अभी देखो अफगानिस्तान का हालत अभी भी ऐसा ही है. सो व्हाट महाभारत सेज, यू शुड हैव गुड कंपनी. Don't have company with Afghanistan people. You should only have company with the people on Krishna side. So a righteous vision, a leadership is with the righteous vision, dharma, visionary leader. Leader को visionary leader बोलता है. So even if you want to become better, there is no chance because you are guided by wrong people. When you are guided by wrong people, you will have always desire, unsatisfied desire. What is Duryodhana's problem? Unsatisfied desire. That is the problem. And Duryodhana's mother, Gandhari, the saddest people in the world. One example is Duryodhana's mother, Gandhari. Why? When son is not good, mother becomes sad. Correct? Definitely Gandhari called Duryodhana and said, why are you becoming like this, my son? Why can't you be a good boy? Duryodhana's answer was, Janami dharmam. Mother, I know what is dharma. Nachame pravritti. I am not able to do it. मेरा क्लास में सब सीख लिया है, theoretical class, but practically नहीं कर पाया. क्यों नहीं कर पाया? केनापि कामेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोसि तथा करोमि. मेरा डिजायर, अनस्टॉपेबल लस्ट डिजायर इज पुशिंग मी इनटू दैट. मुझे ये नहीं करना चाहता हूं, बट हो रहा है, मैं क्या करूं? जानामि धर्मम नच मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच मे निवृत्ति. आई एम नॉट एबल टू स्टॉप डूइंग इट. My desire is so much pushing me into that. That is the problem. So it is not visionary leadership. It is making it practical with good guidance, good mentorship, selecting a good mentor, putting them into practice. That is what the right duty has to be advised by right people with the objective and scope defined well. कर्मण्ये वादिकारस्थे मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहे दुर्भुर माते संकोस्तु कर्मणि. Don't get binded by your desires. That is the holistic perspective of management. पहले बार बोला था मैंने, holistic perspective of management. So holistic perspective of management कब आता है? Only when there is a good leadership. So Mahabharata was guided by God Krishna, Bhagavan Krishna. So the battle was with the dharmic righteous duty. उसमें छोटा छोटा मैनेजमेंट टेक्निक्स, टैक्टिक्स, वार टैक्टिक्स पूरा यूज कर सकते हैं. मेरा एक लेक्चर है वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी ऑन वार फिलोसफी, यूट्यूब पे है. वार DrTPS. इफ यू टाइप फिलोसफी यू विल सी ऑन फिलोसफी डे आई गिव ए टॉक. उसमें पूरे एक्सप्लेन किया है हाउ वार इज एथिकल, कौन सी कॉन्टेक्स्ट में एथिकल होगा, हाउ वार कैन बी जस्टिफाइड. मेरे पर्पस के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, बाकी लोगों के पर्पस के लिए कर रहा हूं. When a doctor has to cut a small wound, he will have to cut, सर्जरी करना पड़ेगा.
An advocate has to go to a court and then keep lying to save his people. So war ethics is always defined for the purpose for which you are defining the war. So here the purpose was dharma samsthapanarthaya. For the most of the good people, they want a good world. King has to fight a war. Therefore, don't think that Mahabharata was not compassionate war. It was a compassionate war. It was seva, it was service, it was compassion. The leadership involves selflessly for the well-being of the lot of other people. मेरे selfish के लिए नहीं, selflessly for the people. That is the principle which we have to understand. That is what we will see in 3rd chapter, 22nd sloka. You will see Mahatma Gandhi. In modern figure, if you want to look at, Mahatma Gandhi did lot of seva, service, selfless service for the welfare of others. So his leadership has changed a lot of people. And that was with non-violence. Non-violence is yama. In 8 Ashtanga Yoga, yama, first step. Yama ka matlab non-violence. So who is a man who has gone to the first step and become leader in the world? Mahatma Gandhi. Only one step is good enough. 8 steps जाने का जरूरत नहीं है. एक step में जाओ, thoroughly involve करो. 8 steps. First step yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. एक ही step yama, non-violence. Mahabharata is also like that. Though it is seen as a violence by many people, the first chapter is Arjuna Vishada Yoga, violent Arjuna's mind. The last chapter is Moksha Sannyasa Yoga, the silent Arjuna. So, I want to do things, I want a lot of confusion in my mind, I become violent. I have decided to do, I become silent. That is the courage and determination I have. So the 4th point which I am saying is courage and determination. Virata, bravery. You have to have brave mind and brave manas and brave actions. So Bhagavad Gita, last time पे quote नहीं किया होगा, 11th chapter 32nd sloka. 11th chapter 32nd sloka. Kalo asmi lokakshayakrit pravruddho lokan samahartumiha pravartaha rudo abitvam na bhavishyanti sarve ye avastita pratyanikeshu yodhaha. Time, I am enjoying or I am being in part of engaged totally in destroying the whole world. Who? Bhagavan Krishna. So Krishna says the world is Kalo Asmi, the time itself and the space itself, everything is getting changed. The great destroyer of the world, Kalam, the time. The time cannot be stopped. Whatever happens, it happens. My life, take birth and then I go. So can you make people to survive the whole world? Throughout the world, throughout the time. Kalam, keep going. Time, keep dying. Birth and death happens. I appreciate that God who is not able to control even the day and night, summer and winter, all that happens. The samyoga and viyoga, meetings and partings. Tagore ne bola ek bar, life is filled with meetings and partings, but no meeting is everlasting, only parting is everlasting. हमने अभी meeting पे चल रहा है, we are meeting each other, but no sure, nobody, I will not see any one of you tomorrow. Only rarely some people after the talk calls me, send messages, keep calling to their place. Only chance of meeting once in a while. Out of 200 people we meet, now 60 plus few people are there. 60, 65 people are there. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maybe 70 people are there. Out of that 70 people, only 1 or 2 people we will meet. That's all. So life is with a lot of samyoga and viyoga is permanent. Day is there, night is there. Night is permanent. Day is only when the sun comes. Growth is there, decay is there.
Birth is once, death is every day. Every day we are dying. Actually, tomorrow we are taking birth, but last day we will not take birth again. That is because our prarabdha karma. Even Bhishma died, Drona died. Bhagavad Gita started only on the 10th day when Bhishma was killed. That is when everybody got worried. What will happen now? So the Mahabharata talks about I have no control. Bhagavan says I am not the person who is controlling. People keep dying, keep living. Time will go. Everything happens. But that is not my job. Controlling is not my job. I am also not unstoppable. Kalesmi, whatever that happens in the kalam, it has to come. Kalo asmi loka kshayakrit pravruddho lokan samahartumiha pravartah. It just happens as the way it has to happen. Rite api, the climate keep on changing. Tvam na bhavishyati sarve. Who is able to stop the climate? Rutu will come and then winter will come, summer will come, rain will come. All keep changing. E avastita pratyanikeshu yodha. And we don't have to worry about these small things. With courage, thinking that I am not a permanent person here, I am ready to survive with all the problems. Whatever happens, I am trying to live in this world forever. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. Let whatever happens, either you be active or not active, one day you will die. So what is to be done? Keep active. Nimisham jolitam sreyam nadu dhumayitum chiram. Nimisham jolitam sreyam. I have that prabha, the sweet light, the brightness in me. If I try to cover that, being lazy, not doing things, postponing things, फाइंडिंग फॉल्ट विद एनवायरमेंट में वो कवर करे तो क्या होता है? इनसाइड अग्नि है, हमारे सबके साथ अग्नि है, काम करने का चेतना है, बट चेतना को आप कवर कर रहा है. कवर करे तो क्या होता है? When Agni is inside, when you cover, smoke comes out. It looks so ugly. So don't cover your chetana. You have to be very active all the time. That ability to be active. People क्या हो सकता है, एक बार think and become तंग. काम भी नहीं करते, वो तंग हो जाता है. think and become तंग. वो ऐसा भी नहीं होना है. Strategic thinking. युक्ति युक्तम उपादेयम वचनम बालकातपि अन्यत्रणम अवत्याज्यम अप्युक्तम ब्रह्मकातपि. युक्ति, I have a requirement, I have a leadership, I have a sharp strategic thinking, very sharp. I know how to navigate my path. There are a lot of problems. I will remove all the problems and then go ahead. That ability to think strategically is the fifth point which I want to tell you. You can see a lot of examples from Chanakya. He was thrown out, or he has left one village, went to the another village. On the way he found somebody playing a drama. Usko pakad ke he made the Prajapati, the great king. So I decided that I want to do, nobody can stop me. That ability, we have examples in our Indian Shastra. We have great example. Chanakya has given good example. Artha Shastra is one of the greatest example of how somebody can be changed from a normal person to a king of kings. That is possible. So the story of such people are not from examples. The Maurya Samrajya, Chandragupta Maurya, is not created by Kaudilya from his knowledge. He has taken knowledge from the previous Veda, Upanishads, Bhagavad Gita, सबसे लेके implement किया है. So a leader needs to take lessons from different places, put it into practice with his strategy. That is why Alexander could not invade India. One man who united India and then said, we are united. A beautiful documentary series came in Doordarshan, Chanakya. आप लोग नहीं देखा तो देखना एक बार. He goes to each and every king and then pleads, आप join करो. India is a great country. Bharat can only survive if you think that Kashmir is being affected because of
some enemy comes like Alexander, don't think that it is only my head is getting affected. My hands are safe. Hands are not safe when head is not there. Don't see my hand is getting affected and you don't think, because without head, hand cannot survive. So India is like a human body. Khand hai. All the khand has to join unitedly like a human body. Then India can fight against Alexander. What a great message. What a great strategy. He is the leader who makes strategies for fighting. And each manager under him, each kingdom, 580 different kingdoms, all of them surrendered and then became united. Seeing the whole troop as a one, Alexander ran away from India. He couldn't cross and then come and invade it. Otherwise, India would have had a different history. So one man can change. He is the leader. The humility and self-service, the reflection of everyone. मैं कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा हूं? आई एम ए लीडर, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, हेडवेट नहीं होना है उसको. ह्यूमिलिटी, विनया, बेस्ट क्वालिटी ऑफ ए लीडर, विनया. Humble, reflecting, recognizing. That is why be with the people and think beyond the people. To be with the people, I must be with the people with vinayam, humility, humanity, social aspect, human being, being human, social being social. Be with the people. 9th chapter, Bhagavad Gita, 22nd sloka. Beautiful example. 9th chapter pe, it says, 22nd sloka. 9th chapter is Raja Vidya Raja Guhya Yogam. Raja Vidya Raja Guhya Yogam. Guhyam means secret, esoteric. सबको नहीं बोलना है. Guhyat, Guhyataram Maya. Bhagavan Krishna in between he will tell you. Very difficult. You can't understand the whole thing. Ananyas Chintayanto Mam Ye Jana Paryupasate Tesham Nityabhiyuktanam Yogatshemam Vahamyaham. What is the prospective part of anyone who is doing a job? ओ ये आइडिया है मेरे पास, मैं करेंगे. ऐसा सोच बैठने की जरूरत क्या है? उसमें काम नहीं होगा. क्या करना पड़ेगा? ऑल द टाइम वॉट एवर यू थिंक, कीप डूइंग इट विथ अनन्यस चिंता. डोंट थिंक समथिंग एल्स एंड डाइल्यूट योर थॉट्स. फोकस्ड रहना है. अनन्यस चिंतयन्तम, अनन्यस चिंता. डोंट थिंक समथिंग एल्स, डोंट डिफोकस्ड. ये मेरा काम है. पूर्ण कंसंट्रेशन, फुल अटेंशन, डिवोशन, फुल टाइम वर्क, डेडिकेशन, ये पूरा है तो अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते. Don't interpret like many people say that who does upasa to me so become my bhakta. नहीं बोला कृष्ण ने. पर्युपासते, क्या करना है? आपका काम पे आप फोकस करो. Because Bhagavad Gita is not a bhakti textbook. It is a textbook of karma. So do your job with full attention. Ananyas chintayanto mam ye jana paryupasate tesham nityabhiyuktanam. For such people, what will happen? Yogatshemam mahamyaham. Life Insurance Corporation of India का एम्प्लम के नीचे लिखा है योगक्षेमम महाम्यहम. Just by explaining the 3 slokas, 3 lines before that, they kept calling me for a lot of lectures. All insurance company people I taught, most of the people, Calcutta se, Delhi se, Bombay se, Kerala se, सब जगह पे, Hyderabad, Pune, all insurance company I kept talking. Ananyas chintayanto mam ye jana paryupasate tesham nityabhiyuktanam yogatshemam mahamyaham. क्योंकि yogatshemam mahamyaham इंश्योरेंस कंपनी का कोट है, वो टैगलाइन है. वो टैगलाइन में क्या बोला है? Assume I want to make somebody to take a insurance policy. एक बार जाके पूछे तो नहीं लेता है लोग. मार्केटिंग के लिए रोज जाना पड़ता है. Until and unless you get benefit. एक बड़ा स्टोन है, उसको एक हिट में वो ब्रेक नहीं होगा. So how many times I have to hit? How many times I have to hit? No answer for this. Until it breaks, you hit it. Until it breaks, you have to hit it.
मैं क्या करेंगे, 10 बार मारने के बाद ये नहीं होगा बोल के छोड़ के चले गया, somebody else comes and hit once, it breaks. So एक हिट में उसको ब्रेक हो गया, हमारा 10 हिट्स वेस्ट हो गया. क्यों हो गया? बिकॉज मैं छोड़ दिया हूं. कभी भी when you are in an action, don't leave it in the halfway. अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. What is योगक्षेमम? क्षेमम का मतलब क्या है? कीप इट सेफ. योगम का मतलब क्या है? आई वांट डिजायर रहता है. Add all the desire to you. What is our desire? Only 3 desires is there. What are the 3 desires? Anybody here? What are the 3 desires of human being? रोटी, कपड़ा और मकान. That is basic. Okay, रोटी, कपड़ा, मकान. उसके लिए क्या चाहिए आपको? So there is no need, 3 need, only 1 need. The basic need, रोटी, कपड़ा, मकान, और तीनों के लिए मैं एक ही चाहिए, धन चाहिए. अर्थ तो हो गया, अर्थ हो गया, एक हो गया. दूसरा, I am not thinking that all of you are sitting here for अर्थ के लिए इधर बैठ रहा है क्या? धर्म, अर्थ, काम. That is पुरुषार्थ. I am not talking about it. And last is moksha. वो भी बोलेंगे. Now tell me. That is all depends on the artha. But why are you here sitting and listening to my class? Is it because you get a promotion, you get more salary? ज्ञान. So second requirement, human being, second requirement, most important requirement for human being, knowledge. Knowledge, sir. So दो हो गया. Dancing the knowledge. And third one. Dancing the knowledge. One is knowledge, one is money or earth, different earth. One is the vidya, second one is earth, and third one. Every war is not fit for vidya or earth. आचार्य जी कीर्ति या कीर्ति, power and position. That is there in Vishnu Sahasranamam. ध्यान श्लोकम पे देखो आप. वेदांत गो ब्राह्मणः क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धन समृद्धः. So 3 requirements are told. शूद्र सुखम आपनुयात्. चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम. What is चातुर्वर्ण्यम? Depend on desire. आपको नॉलेज चाहिए तो आप ब्राह्मण है. उत्तर प्रदेश काम कर रहा है, ब्राह्मण है. सुनना है, पढ़ना है, उससे प्रचारित करना है, आपका काम है. So all teachers are Brahmins because your desire is only knowledge. आप सैलरी के लिए काम कर रहे हैं तो यू आर ए वैश्य. आप एचओडी बनने के लिए, वाइस चांसलर, पावर पोजीशन के लिए काम कर रहा हूं तो यू आर ए क्षत्रिय. एंड आइदर ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, उसके लिए सब चाहिए हैप्पीनेस. वो हैप्पीनेस शूद्रा का है. Everybody needs happiness. So only happiness without knowledge, without money, without position, they become just shudras. But हमारे लिए थोड़ा शूद्रा भी है, थोड़ा क्षत्रिय क्वालिटी भी है, थोड़ा वैश्य क्वालिटी भी है, बट टीचर्स के लिए थोड़ा ज्यादा ब्राह्मण क्वालिटी भी चाहिए. So all these yoga is what? Yoga of Brahmin quality, yoga of Kshatriya quality, yoga of Vaishya quality, and yoga of happiness is also required. Sir, एक बार repeat कर दीजिएगा please. Yeah, if I am looking for knowledge, Vidya, quality number 1. If I want power and position, देखो इंडिया में पूरा knowledge north से आया है. And all the war happened in Chhattisgarh, Gujarat, Rajasthan, वो area पे. That is the body, the chest part of India. मध्य प्रदेश, खाना उधर से ही मिलेगा आपको कभी भी. That is why it is Madhya Pradesh. That is all Vaishyas. And Shudra, just happiness. That is the South Indian part. So India is divided into north to south like this. So you can see the qualities in people also like that.
They will never rule the country, South Indian people, but they will become all surrendering people who help Prime Minister to do things, right? So Shudra quality है, temporary happiness. Ananyas chinta ये पूरा चाहिए हमको. Yoga of knowledge, yoga of power and position, yoga of money, yoga of happiness, सबको चाहिए. बट हमारा प्रॉब्लम है आज है, कल एग्जाम टाइम पे पूरा भूल जाते हैं. नॉलेज तो है बट सही टाइम पे नहीं आ रहा. धन समाहन किया है बट काम को नहीं आ रहा. वो टाइम पे somebody has stolen it. पावर एंड पोजीशन मिल गया, कुछ तो गलती कर दिया, उसमें से नीचे डाल दिया मुझे, अभी पावर एंड पोजीशन चले गया. क्या होता है? We will become the saddest person. But Bhagavan, only in one case, in the whole mythology, the whole Hinduism, the whole Sanatana Dharma, एक ही टाइम भगवान is giving guarantee. I guarantee you what? योगक्षेमम. आपको सब मिलेगा, क्षेमम रहेगा. क्षेमम मतलब you will never lose it. Yogaksema means I can add wealth, I can add knowledge, I can add power and position, I can also add happiness, but will never be lost. Permanent bliss हम दे देंगे. योगक्षेमम में देता हूं आपको. कब? अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते. Not temporary, permanently concentrate and focus on your job. You will get all the benefits. Bhagavan giving guarantee to you. Only one place in Bhagavad Gita, Krishna is giving guarantee to Arjuna. That means Bhagavan is giving guarantee to all of us. In the whole mythology, it says you are guaranteed your success only when you focus, continuously do job, not temporarily, sometime don't do, and then get rid of, don't run away from your responsibility. पूरा टाइम पे फोकस करके काम करो, आपको सब फायदा मिलेगा. This is the sixth quality which I am saying. And seventh quality of leadership, I am powerful leader, but that is not good enough. I have to make others also leaders. Vivekananda is a great leader, but who made Vivekananda? Paramahamsa made Vivekananda. Hamsa is the lightest bird. Paramahamsa means most lightest person. I don't want anything, but I want one person under me to become great. So Paramahamsa is a great leader. Greatest of the greatest leader than Swami Vivekananda is Paramahamsa. Ramakrishna became Paramahamsa because Vivekananda took birth. So, empowerment to others. I am a person, I can speak like this because I had great gurus. Brahmashri KPC Anijan Bhattadaripad. I have got Acharya, Keshavacharya, and I have got Mahamandaleshwar Swami Veda Bharati. I am a student of all these people. So, they gave me the knowledge. So, my energy is not my energy. Somebody has given me. So, what is my role? I have to give this to somebody else. Ahamatma Gudakesha. 10th chapter, 20th sloka. I am the self, I am the Gudakesha. I am sitting in the hearts of all the people, all the creations. Anybody can become great. It's only you want to make that small spark. Aham Atma Gudakesha Sarva Bhutashaya Sthita. Sarva Bhutashaya Sthita. Aham Adishcha Madhyamcha Bhudanamanda Evacha. I am there in the beginning, I am there in the end also. So, every person has become that leadership quality, strength, power, inspiration, everything. The right time, right people, right time, you have to break it, make it up. That is the freedom which all of us have. Because Bhagavan is guaranteeing you, I am staying inside you. I am staying in each one of you. And what is that leadership? Like the best leader in the world is sun, Surya. क्यों? सबके लिए एक ही तरफ देता है सनलाइट. रिच पुअर, कलर कास्ट, रिलीजियस डिफरेंस, वो पूरा नहीं देखेगा. करेक्ट टाइम पे आता है, करेक्ट टाइम पे जाता है. दैट इज व्हाई वी कंसीडर सूर्य एज द गॉड फॉर ऑल अस. सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः. Surya is, that is why Agni is considered as Bharatiya Indian knowledge system teaches Agni is the Bhagavan, because Surya, without that nothing can happen. So Agni is the symbol of
Surya. So Agni is Surya. Surya is Agni. And justice and fairness like Surya. Nyaya for everyone. Consider everybody equal. No partiality. Impartial. Everybody taking oath, all the ministers will tell impartial. But doesn't happen. Our scriptures, Mahabharata, Shanti Parva, talks about king who righteous, judgment, who is a great leader. Yudhishthira, one of the greatest king, who has got considered everybody equal. So we have a lot of examples. Rama, everybody equal he considered. And then Sthitaprajna, Dukkheshu Anudiknamana Sukheshu Vigadaspruha Vida Raga Bhaya Krodha. That should not happen. Don't get to become dull, sometimes very active, sometimes very dull. Sthitaprajna. Every time adaptability, resilience, every time adapting to the situation. Fluctuation hota hai circumstances pe, but I am not going to change according to the situations. I will be with the people. Matra sparshestu kaunteya shitoshna sukha dukkhada agama paino anitya. There is nothing which is permanent. Anityam. Second chapter 14th sloka it says. Stam sthidis Traswa Bharata. Bharata, don't become up and down like this. Always be Sthita Prajna. The Pitamaha was a strong man, always equal, though he was in the Kaurava Paksha. And Arjuna, keeping all these lessons, on the first chapter, Sankhya Yoga itself, Arjuna got confused. He was telling how to act like a Sthita Prajna. Sthita Prajna Tsyaga Bhasha. 54th sloka. Sthita Prajnasya ka bhasha. How to act like a Sthita Prajna. Bhagavan ne direct answer nahi diya. After one sloka he says Dukkheshu Anudiknamana Sukheshu Vigadaspruha Vida Raga Bhaya Krodha Sthitatir Munirichade. Every one of us. हमको भी होता है, up and down होता है. एक दिन मूड आउट होता है, एक दिन फिजिकली स्ट्रांग रहता है, नेक्स्ट डे फिजिकली वीक लगता है, वन डे इमोशनली अटैच्ड होता है, समटाइम ऑल दिमाग काम कर रहा है, नेक्स्ट डे काम नहीं करेगा. Sometimes we feel we have to talk to everybody. Every day it doesn't happen. मेरा नंबर तो दिया था, मैसेज क्यों नहीं भेजा? ओ मन पे है मैसेज भेजना, बट काम पे नहीं आता है. नेक्स्ट डे we forget. So socially active. I want to contact him. Social activity is there, but we are lazy. That is because up and down होता है. So दुखेशु अनुदिग्धमन सुखेशु विगतस्पृहा वीद राग भय क्रोध सब होता है, but keep it in a limited fluctuation ज्यादा नहीं होना. That is स्थित प्रज्ञावस्था. Then integrity in leadership, satya, truth, being truthful. I can have opinion differences. हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में हमारा लीडरशिप ऐसा ही है. You don't agree, tell me in the meeting. But after meeting is over, agreement हो गया, सब एक ही साथ काम करना है. After decision, don't criticize the people. Before taking the decision, you can have discussions inside party. Discussions हो गया. Once the leader is selected, everybody should support the leader. Then don't criticize the leader. Right? So that is the integrity. Inside that you can have discussion. When decision is done, be with the people. So we have Harishchandra's example, Ramayana example. So many examples can be given. How people have to be steadfast with the ruler. Now the true leadership is a blend of all these together. I wanted to tell you vision. Point number 1, vision. Leadership ka matlab vision, righteousness, compassion, humility, strategic thinking, empowerment, ethical action. All these together, you can see great leaderships. This is what I want to tell you. हिंदी भी बता दीजिए एक बार. Oh, I think सभी का हिंदी भी बता दीजिएगा. I think I will require somebody's help. Vision is दृष्टि चाहिए आपको. You want to have beautiful vision. Vision. दर्शनम. संस्कृत में दर्शनम बोलता है. Righteousness, सत्य. Compassion, दया चाहिए. Humility, social being social, human being human. बाकी लोगों के साथ हम कैसे डील करना. स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, प्लानिंग में अच्छा रहना है. आज का बात मत वो सोचो वो कैसे होगा. दूर दृष्टि चाहिए आपको कोई भी डिसीजन पे.
एम्पावरमेंट, सबको हम धीर है, हम लीडर है, वो उसमें वो छोटा सोच है, उससे ज्यादा बड़ा सोच कैसे होता है? व्हेन पीपल विथ मी, मेरे साथ कौन कौन है, सबको लीडरशिप देना है, एम्पावरिंग अदर्स, एम्पावरमेंट। एथिकल, हम सही बोलेगा, क्या बोलेगा वो करेगा, वो क्या कर रहा है वो देख के बाकी लोगों के साथ ही देगा, वो कुछ अच्छा काम कर रहे तो उसको सपोर्ट करेगा। दैट इज व्हाट इज एथिकल एक्शन। और मेरा बेनिफिट के लिए नहीं है, बाकी लोगों का फायदा के लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूं। दैट इज व्हाट इट इज। सो आई थिंक आई कैन स्टॉप हियर। आई स्पोक 50 मिनट्स, गुड इनफ। आपका कुछ क्वेश्चन है तो लास्ट टाइम देयर वाज सम क्वेश्चन, I think you can ask that. I can tell you that this is one of my book, Bhagavad Gita, the Gita way. Bhagavad Gita, the Acharya is here, I am here, my student is here. वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, आजकल का दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे अमेरिकन स्टूडेंट आस्किंग मी क्वेश्चंस, वो पूरा ब्यूटीफुल स्केच देके, ऐसा पिक्चर बीच बीच में देके, आई हैव गिवन लाइक ए मॉडर्न वर्ल्ड, हमारा आजकल का प्रॉब्लम हम कैसे डिस्कस कर रहा है, साथ साथ बैठ के डिफरेंट प्रॉब्लम्स, फाइंडिंग योर चैरियट, इनर स्ट्रेंथ एंड द वेल बीइंग, एंड दिस इज लाइक ए साइकोथेरेपी बुक. भगवद गीता itself is a psychotherapy टेक्स्ट बुक. मेंटल पेशेंट अर्जुना को स्ट्रेंथ देने के लिए डॉक्टर कृष्ण ने भगवद गीता बोला है. पहले द मेंटल पेशेंट रामा को how Vasishta has given, that is called Yoga Vasishta. So Bhagavad Gita is equal to Yoga Vasishta. And आजकल दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बच्चों के लिए, तो it's a discussion between me and my student. That's what it is. Okay. सर प्रणाम सर. नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है, सर जिज्ञासा है. सर, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था स्थित प्रज्ञ के बारे में, लेकिन नाउ डे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्थित प्रज्ञ? और उस समय अर्जुन तो कोई टीचर नहीं था, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, लेकिन उसको स्थित प्रज्ञ का उपदेश क्यों दिया गया? और अगर हम टीचर हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर हमको स्थित प्रज्ञ बनकर काम करना है, तो उसका आज के समय में क्या परिभाषा है आपकी दृष्टि में? एक्चुअली सिचुएशंस कुछ बढ़ावा नहीं है, एक ही है. आजकल एग्जामिनेशन हॉल पे जा रहा है कोई लोग, उसको कंफ्यूजन होता है, I will not pass, I have this problem, I have that problem, if I write what will happen, if I don't write what will happen. वो कंफ्यूजन आज भी है. लाइक व्हाट अर्जुना हैड ड्यूरिंग द वॉर, पहले दिन भी मालूम है उसको, ऑल दीज आर माय रिलेटिव्स, आई कैन नॉट फाइट. इज दैट वो दिन सुबह ये पूरा रिलेटिव्स बन गया, कल मालूम नहीं था दूसरा पक्ष में कौन कौन रहता है, सब पता है. आज भी ऐसा ही है. When I know what is the question coming, I know there is an examination coming, I have to be ready. इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, I have to be ready. I have to face lot of problems in my life. So it is not Mahabharata war. It is every day in our inside of us what war is happening. That is why yesterday I said Mahabharata is not a war which happened in Kurukshetra between Pandavas and Kauravas. It is inside all of us. हम रामायण के टाइम पे देखें तो दिस इज बिटवीन वन कम्युनिटी टू अनदर कम्युनिटी. रामा वन कम्युनिटी, रावणा अनदर कम्युनिटी, डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट प्लेस. एक ही राष्ट्र में नहीं है, दूसरा राष्ट्र पे था. कम्युनिटी टू कम्युनिटी वॉर इज महाभारत. व्हाट इज our no Ramayana is community to community. Mahabharata is within the family there is a fight. Within the family there is a fight. That is Mahabharata. So today's relevance, today is between my buddhi and the manas. मेरे अंदर फाइट हो रहा है. So Atma is the
Krishna, buddhi and the manas, logical reasoning, power, position, Kaurava. My manas, I want. Sometimes this becomes Kaurava, sometimes this becomes Pandava. Sometimes this becomes Pandava, sometimes this becomes Manas becomes Kauravas. So it's a fight between that. So what is Sthita Prajna? I should not become too sad. I should know how to contact people. I should not become. Most of the suicides, most of the problems happens because we are bounded. Arjuna is being told by Krishna, don't worry, you fight your war. Either you win or don't win, anyway you are going to die. See, you see what is happening today. Examination में fail हो गया. अभी हैदराबाद पे टैंक बंदे हैं. Many people jump there and commit suicide. आप कभी भी देखो, after examination, people are so depressed because they are not able to control their emotions. So what is Mahabharata? What is Bhagavad Gita? Don't become uncontrolled with your emotions. Every day it is said. This is what Rama was also taught by Vasishtha. So either Ramayana or Mahabharata or even today, the lessons are saying, don't become sad. That's why yesterday also I said. Yeah. सर क्या ये अप्रोप्रिएट होगा हर सेक्टर के लिए? हर सेक्टर के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए. I am a psychotherapist. Lot of people come with family problem, work problems, promotion नहीं मिला, नहीं तो examination fail होगा. Every day there is a discussion. मेरा YouTube पे जाके वो मलयालम पे होगा. Most of the discussions are happening family problems, teachers problems, workers problem, company problems. All of them are depressed. और depression इसलिए हो रहा हो. That is what the depression Arjuna had. Arjuna Vishada Yoga. That depression is there today also for people. I can't fight. I have got. Even today morning I had a discussion. 1 hour का discussion था. I have this ability. I have that ability. I know I can do it, but I am not able to do it. क्यों हो रहा है? The reason is that it is not a Hindu who has learned. Christians आता है, Muslims आता है, Jain, Sikh, सब लोगों के पास एक ही problem है. Don't think that Bhagavad Gita is only for human, for भक्ति के लिए, हिंदू कम्युनिटी के लिए बनाया है. सब लोगों के हर वर्ल्ड पे एक ही प्रॉब्लम है. यू गो टू DrTPS, आप अफ्रीका देखो, अफ्रीका से बहुत लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं. उधर भी प्रॉब्लम वही है. दे वांटेड टू डू यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम चलाते में अफ्रीका में. दे हैव ए ग्रेट एबिलिटी टू फाइट, बट some people are controlling the mind, some people are controlling the world. They are become so. No, even today what happened in Mahabharata Kaurava Paksha is happening in Africa in some places. Some blind people are ruling the country there. They become so selfish. That is why they are into poverty. They have problems. So this problem is common. हर जगह पे, not even in India, not even in youth, everywhere problem एक ही है. सर एग्जांपल देना चाहता हूँ. हाँ. एक एडमिनिस्ट्रेटर या जो कि ना सक्रिय है ना निष्क्रिय है. या ना सुख में कुछ होता है ना दुख में कुछ होता है. हाँ. चुपचाप बैठा रहता है. हाँ. कर्मचारियों ने उसको आगे ले जाते हैं. तो वहां पर क्या फॉर्मूला उसमें अप्लाई किया जाएगा? नो. तो वो उसको कहेंगे तो वो स्थित प्रज्ञा है? नहीं, वो स्थित प्रज्ञा नहीं है. दुखेशु अनुतिग्न मन सुखेशु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध, उसका मतलब सुख दुख नहीं होना बोल के नहीं है. होना है बट कंट्रोल होना है. डोंट बिकम टू मच अपसेट डाउन. उसका मतलब वो नहीं है मैं आई विल नॉट स्कोल्ड माय सन. मैं वो सुपरवाइजर हूं, मेरे नीचे वालों को मैं स्कोल्ड नहीं करेगा, आराम से बैठेगा, ऐसा नहीं है. आई विल डू ऑल दैट, बट उसके मतलब वो नहीं है आई एम स्कोल्डिंग. आपका नाम बसंत है ना? जी जी जी. बसंत मेरा बॉस है, नहीं तो मेरा सबॉर्डिनेट है. बसंत मुझे कुछ बोला है, आई बिकम सो डिप्रेस्ड. वो उसने बोला है मैं काम नहीं करेगा बोल के बैठने वाला नहीं है. आप मेरे सबॉर्डिनेट है, मैं कुछ आपको बोल दिया, वो डांटना है तो डांटेंगे, डिप्रोमोट करना है तो डिप्रोमोट करेंगे, लिखना है तो लिखेंगे, पूरा एसीआर खराब कर देंगे. बट उसके बारे में सोच के आई विल नॉट बिकम नॉन एक्टिव. कुछ करना है तो करने के बाद उसके बारे में सोच के डिप्रेस्ड नहीं होगा.
That is what is Sthita Prajna. Sthita Prajna is not getting mood off. Mood off हो सकता है. A father has to scold the child has to become depressed. Maybe मेरा मूड खराब हो सकता है, खराब होने वाला है, खराब होना है, वो नहीं है तो क्या है रिलेशनशिप. वी आर ह्यूमन बीइंग ह्यूमन, टेंडर हार्ट होना है, बट वो सोच के सुबह से शाम तक कुछ बिना करके आराम से बैठना नहीं चाहिए. इमीडिएटली ओके छोड़ दो, मैं काम पे आ रहा हूं. आप कहां पे रहते हैं बसंत जी? सर झारखंड. मैं झारखंड पे आया था. आई केम टू आवर द शिवा टेम्पल है ना उधर. हाँ सर, देवघर पे आया था मैं. जी सर. आप देवघर पे नहीं है तो काशी पे आप स्कूटर चला रहा है, किसी के ऊपर एक मारे तो उसको गुस्सा नहीं आता क्या? बिल्कुल आता है सर. बिल्कुल आता है. बट इमीडिएटली क्या करते हैं आप छोड़ दो यार, अभी तो हो गया, चले जाओ. बोलते नहीं बोलते? तो भी सर मार तो पड़ेगा, बट फिर भी हम चलेगा ना. वो होता है रश पे कैसे भी हो सकता है. आप पहली बार हो रहा है तो ठीक है, आपको ऐसा लगेगा. 3 बार हो गया तो मार्क भी आप छोड़ेगा नहीं. छोड़ दो, कोई बात नहीं है, छोड़ दो, चले जाओ. मैं बहुत बार सुना है, इधर इन काशी और सब जगह पे स्पिरिचुअलिटी ज्यादा है, सब जगह पे रश ज्यादा है. उधर किसी को एक बार मारे तो भी झगड़ा ज्यादा नहीं होता. हमारे इधर तो अच्छी पिटाई होती है सर. थैंक यू. आप कहाँ से हो जी? हरियाणा से सर. हरियाणा पे हो सकता है. अच्छा जी, सर नो एक्सक्यूज सर, एक बार ठोक दिया तो पिटाई जरूरी है. होता है, बट फिर भी 2 बार उसके बाद हम बोलते हैं जाने दो यार, हो गया, चलो जाओ. बहुत बार सुना है जी. नया कार है तो उसमें एक फर्स्ट मार्क आ गया तो फर्स्ट मार्क आ गया तो आपको गुस्सा आ जाता. 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, आपको गुस्सा नहीं आता पक्का. आप नया शर्ट पहन के किधर भी बैठो, थोड़ा मट्टी हो गया तो आपको गुस्सा आ जाता है. आप उसमें ही घुस रहा है तो प्रॉब्लम नहीं होता ना आपको. तो दैट क्लाइमेटाइजेशन, दैट एक्लामेटाइजेशन, मेकिंग दैट टू बिकम ए रेगुलर रूटीन, काम आराम से चले दो. दैट एबिलिटी इज नॉट टू डू वर्क नहीं है, काम करने के बाद भी ऐसा करना है. इट इज नॉट मेकिंग पीपल लेजी, इट इज मेकिंग एक्टिव, बट टेक इट लाइट. उसमें कुछ प्रॉब्लम है, छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट. इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन वसंत जी, आप बहुत बड़ा. अच्छा जी, माते संगोष स्वकर्मणि भी तो भगवान ने कहा है. या तो उसका पूर्व श्लोक भी बोलो. जी, कर्मणि वलकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोष स्वकर्मणि. सो अकर्मणि, आई कैन नॉट कीप क्वाइट. पहले ही बोला है, सही बोला आपने. सो everyone does job, there is no point in which I can keep quiet. मैं काम करना ही पड़ता है. So it is not making people idle. अच्छा जी, क्षमा चाहता हूँ, पिछले सत्र में गीता जी पर चर्चा किन्हीं और आचार्य ने की थी, तो वहां पर मेरी जिज्ञासा यही थी कि यदि दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतः प्रियः और आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, अगर ये स्थिति होगी तो ऐसी स्थिति में क्या बेपरवाही नहीं आ जाएगी? कोई केयर ही नहीं. हमारा कर्म का, कर्तव्य का फायदा किसको होना है? मेरे लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए. सो बाकी लोगों के लिए मैं काम कर रहा है तो मेरा मन तुष्ट होना है. मैं तो कुछ खा रहा हूं, देयर इज वन डॉग आस्किंग फॉर सम फूड. मैं खुद आराम से खा सकते हैं क्या? उसको देना पड़ता ना. बिना दिया आप खाए तो आपको तुष्टि आता है क्या? नहीं, तो नहीं आता ना, कभी भी नहीं आता है. हम थोड़ा पार्ट देना पड़ता है. जी, भगवान ने 3 प्रकार के सुख बताए. तो उसमें तामसी सुख, राजसी सुख और सात्विक सुख. तो सात्विक सुख तो यही है कि दूसरे को सुख देने से हमको जो सुख मिलता है वो सात्विक सुख है. अब यदि हम गुणातीत अवस्था में पहुंच गए तो गुणातीत अवस्था में किसी को क्या होता है सर, कोई परवाह ही नहीं है. गुणातीत अवस्था वो नहीं है मेरे पास, सात्विक राजसिक तामसिक नहीं है बोल के नहीं है. 30% है तो आप नॉर्मल सिटीजन होता है. 1/3 हो गया, आप नॉर्मल सिटीजन है.
वो सब में रहता है। रावण में भी सात्विक अवस्था है, रावण में भी तामसिक अवस्था भी है, हमारे पास भी है। हम राजसिक भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है, सात्विक भी हो सकता है। 24 आवर्स एक ही जैसे रहना मुश्किल है। तो क्या होता है, सात्विक अवस्था थोड़ा ज्यादा हो गया तो वी गो टू लिटिल मोर क्लोजर टू भगवान। राजसिक अवस्था थोड़ा ज्यादा हो गया तो वी गो टू रावण। तामसिक अवस्था ज्यादा हो गया तो वी बिकम कुंभकर्ण। सो हमारे लिए ये पूर्ण अवस्था नहीं है। राजसिक, सात्विक, तामसिक 3 अवस्था में इधर है, मैं इधर है, इधर है बोल के नहीं बोल सकता है। वी कीप चेंजिंग रोल्स में, थोड़ा थोड़ा उधर उधर चेंज हो सकता है। सो वी आर 1/3 1/3 1/3 1/3 है। सो ये बैलेंस करना हमारा काम है। कब गुस्सा आना, उधर गुस्सा आना ही है। अग्रदश चतुरो वेद पृष्ठज शशरम धनु। हमारा पूर्व भगवान का पिक्चर्स देखो आप, ये आशीर्वाद का सिंबल रहता हाथ में, बट पूरा भगवान के पीछे क्या था, वेपन था। किधर आशीर्वाद देना वो दे सकता है। सात्विक अवस्था पीसफुल भाषण देना बहुत अच्छा है, बट आप नहीं सुने तो मैं क्या करेगा, मैं नहीं सुने तो वेपन लेना पड़ता है। wherever I have to, या सामा वेद दंडा, हमारा भगवान ने ही बोला है। दैट इज वाई कृष्णा हैज गॉट अ वेपन, दैट इज वाई रामा हैज गॉट अ कोदंडन। वाई इज कॉल्ड कोदंडा। वो धर्म का स्थापना करने के लिए एक एक बार पीछे से भी लेना पड़ता है। हाँ, और जिज्ञासा है जी, जैसे आप श्री के मुख से कहा गया कि भगवान ने गीता जी में कर्मयोग की प्रधानता दी है, तो कर्मयोग से भी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। तो जब कर्म करने से कर्म का फल होगा, फिर पुनः कर्म करने से फिर कर्म का फल होगा, तो इस प्रकार से तो कर्म की श्रृंखला से कर्म बंधन बना रहेगा। तो कर्म से मुक्ति कैसे होगी? कर्म से मुक्ति मोक्ष पे हो जाता है। सो मोक्ष कब होता है, मोक्ष होता है वो टाइम पे आपका पूर्व जन्म का पूरा मिलके 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 आपका जन्म सफल हो गया, आप भगवान के साक्षी हो गया। सो दैट इज व्हाट आई सेड, पूर्त कर्मा इष्ट कर्मा। मेरे लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब उसके लिए कर रहा हूं। दैट मोड व्हेन वी कम वी गेट इनटू मोक्ष, वो भगवान के साथ। इवन भगवान कृष्णा और रामा पुनः पुनः दे हैड जन्मा, राइट? सो व्हाई दे हैड जन्मा अगेन एंड अगेन व्हाई दे हैड जन्मा? बाद में थोड़ा एक मुश्किल काम करे तो डेफिनेटली इट कम्स बैक। ये पोएट्री पढ़ो आप, एरो कम्स फ्रॉम शैडो। राम तो धर्म पुरुष था, बट एक गलती किया था। वो गलती क्या था? हाइडिंगली वो वार बिटवीन बाली सुग्रीवा के टाइम पे हाइडिंगली ही हैज पुट एन एरो, दैट इज व्हाई ही सेड एरो फ्रॉम शैडो। सामने आमने सामने वार नहीं किया, हाइडिंगली किया है। तो इसके लिए क्या हुआ, नेक्स्ट जन्म को कृष्णा को he got an arrow and then with that he died. So even भगवान has no escape. एक जन्म पे कुछ हो रहा है, नेक्स्ट जन्म पे वो आ जाता आपको। This is my book on life of love, a poetry. So one जन्मा you do some small mistake, आपको पुनः पुनः वो आ जाएगा आपके ऊपर। So you have no escape sometime. भगवान के लिए भी escape नहीं है, फिर हम के लिए क्या बोल सकते? सर, एक मेरा प्रश्न है कि क्या हम अपना जीवन पूर्णतः ईश्वरीय विधान पे छोड़ दें या जिंदगी की डोर अपने हाथ में रखें? क्योंकि कुछ घरेलू बातें या परिस्थितियां ऐसी हैं। एक मेरे भाई हैं जो घर पे खेती बाड़ी करते हैं और मैं जॉब में पिछले 3 साल से हूँ। हमेशा काम पड़ता है पैसे का, तो मुझे भेजना पड़ता है क्योंकि खेती बाड़ी करते हैं, कहते हैं कि मेरी कोई आमदनी नहीं है। ऐसे करते करते पिछले 3 साल में मैंने 10 लाख रुपया लगभग दे चुका हूँ। और एक बार सरसों का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ, मुझे लगा कि मैं तेल खरीदे खाता हूँ, 1 क्विंटल सरसों ले चलते हैं, इससे इसका जो है तेल निकाल के मैं यूज़ करूँगा। ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी, काफ़ी एंग्री हुए। दे तो दिए, लेकिन
घर में काफ़ी कोलाहल हुआ, तो मेरी बीवी ताने मारी या उन्होंने आगाह किया कि आप करते रहिए घर परिवार के पास, बाद में खाली हो जाएंगे, फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इस रिश्ता को तोड़िए। अब मैं बड़ा धर्म संकट में हूँ कि क्या करूँ। एज ए काउंसलिंग मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, See, किधर जाए आदमी? yeah, it's a सही है। ऐसा प्रॉब्लम्स बहुत बार मैं बहुत लोगों से सुना है। द प्रॉब्लम इज, मैं तो सात्विक हूं, मेरे पूरे खानदान वाले, मेरा एनवायरमेंट, सब लोग राजसिक तामसिक है, तो मैं क्या करूं? और एक छोटी सी और बात बताना चाहते हैं, वो पढ़े ज्यादा नहीं, इंटर क्लास तक ही पढ़े हैं सर। नो, इट इज नॉट व्हाट यू आर एजुकेटेड। एजुकेशन अलग है, विजडम अलग है। यस सर। करेक्ट। देयर आर लॉट ऑफ एजुकेटेड पीपल, दे डोंट हैव विजडम। दैट विल नॉट गो। ग्राफ ऐसा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है कभी भी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज, हमारा एनवायरमेंट, हमारा परफॉर्मेंस तीन पोर्शन पे होता है। वन इज माय परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन माय स्किल। मैं ये करना है, मुझे ये कर सकता है, दैट इज स्किल। सेकेंड वन इज एनवायरमेंट, मैं किसको किसके साथ कैसे डील कर रहा हूं, एनवायरमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड वन इज माय एटीट्यूड। आपका एप्टीट्यूड ठीक नहीं है तो एनवायरमेंट आपको स्क्यूज करके लेके जाते, पूरा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो बैलेंसिंग माय एनवायरमेंट, बैलेंसिंग माय एटीट्यूड एंड बैलेंसिंग माय स्किल। आपका स्किल ये होना है व्हेन टू से नो, व्हेन टू से यस। आप कहीं जगह पे यस बोलना चाहिए तो यस बोलो, यस नहीं बोलना चाहिए तो डोंट रिपीट। आपसे नहीं हो रहा है तो यू हैव टू टेल समबडी एल्स टू गो एंड टेल। व्हाई कृष्णा वेंट फॉर ए मीटिंग, उसमें भी बहुत मुश्किल हो गया था उसको। एवरी टाइम ही वाज नॉट सक्सेसफुल। अंडरस्टूड? सो इट इज नॉट विथ ऑल ऑफ अस। व्हेन वी डोंट नो हाउ टू से नो, वी हैव टू मेक समबडी एल्स टू टेल नो। सामने वाई भीष्मा के सामने शिखंडी को रख दिया? यू शुड नो हाउ टू फाइट वार, दैट इज अ बिग प्रैक्टिस। सो महाभारत में सबके लिए प्रॉब्लम दिया है, उसको सॉल्यूशन भी दिया है साथ ही साथ। हमको कुछ नहीं बोल सकते तो हम क्या करना, शिखंडी को लगाना पड़ता है। तुम बोलो, मैं नहीं बोलेगा उसके साथ। ये टाइम सही नहीं है, डे टाइम पे हम नहीं बोल सकते, रात में आ जाओ, मैं बोलता हूं आपको सही। सो स्किल, ये सुनो, डॉक्टर टीपीएस का फॉर्मूला है परफॉर्मेंस पी इक्वल टू ए प्लस ओ प्लस एस, एटीट्यूड प्लस स्किल प्लस अपॉर्चुनिटी। एंड और एक बार सुनो आप, वी हैव ए गोल। आपका गोल कुछ होगा, आपका ब्रदर का, भैया का गोल अलग होगा। आपका रोल अलग है, उसका रोल भी अलग है। आपको और एक रोल है, यू आर ए हस्बैंड, you are a father, you are a daughter, you are a son, you are a mother, you are a sister, I am a neighbor, I am a employee, I am a employer। सब अलग अलग रोल्स रहता है। and one is my goal, one is my role। ये दोनों कैसे जोड़ना है? my values। मेरा वैल्यू ठीक से नहीं है, I will be excused from my role, excused from my goals। तो ये रोल गोल वैल्यूज बैलेंसिंग, नंबर वन लेसन। नंबर टू, परफॉर्मेंस इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी प्लस स्किल प्लस एटीट्यूड, बैलेंसिंग दिस। राजसिक तामसिक सात्विक, बैलेंसिंग दिस। एंड बिटवीन somebody told अर्थ काम अर्थ मोक्ष समथिंग लाइक दिस, राइट? बट वो मेरा सीक्वेंस वो नहीं है, मेरा सीक्वेंस अलग है। मेरा सीक्वेंस है, मुझे एक आग्रह है, एक इच्छा है, दैट इज काम। सब जॉब स्टार्ट्स विथ द फर्स्ट इच्छा। सो व्हाट इज फर्स्ट? नॉट अर्थ धर्म काम मोक्ष, फर्स्ट काम। मुझे डिजायर है, डिजायर से स्टार्ट होता है। टू सैटिस्फाई डिजायर व्हाट आई नीड इज अर्थ। तो आपके लिए कुछ डिजायर नहीं है तो सब अर्थ किसी को भी दे सकते। आप डिजायरलेस नहीं है, आपको भी डिजायर है। आपको नहीं है तो आपको, आपका फैमिली को डिजायर है। सो मेरा अर्थ किसके लिए चाहिए? सबके लिए चाहिए। सो उसका पोर्शन किसको कितना देना है? हमारा पीएफ को डिस्ट्रीब्यूट देता ना, पेंशन के टाइम पे इतना उसको दे दो, उसका परसेंटेज दे दो। बिकॉज माई डिजायर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पेंशन भी नहीं चाहिए, वो सब उसको दे दो, वो भी कर सकते हैं आपको। तो
माई अर्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. सो काम अर्थ सबका काम देखना पड़ता है. माई सन हैज डिजायर, दिस हैज वाइफ हैज डिजायर, पूरा सैलरी पेंशन उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. अर्थ, देन कर्म अर्थ, देन आई डोंट डू इट विथ धार्मिक. एक को ज्यादा दिया, एक को कम दिया, धर्म ठीक से नहीं किया. धर्म ठीक से नहीं किया तो क्या होता है? देयर विल बी प्रॉब्लम. मुझे आई हैव टू गो एंड सी सिंगापुर, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं चोरी करके पैसा लेके गया, विल आई हैव एंजॉयमेंट? हैप्पीनेस रहते नहीं रहते? नहीं रहता, क्योंकि कैसे भी वापस आना है. वापस आते वक्त कोई पुलिस आके पकड़े तो हो गया, तो आई कैन नॉट एंजॉय दर. सो मेरा मोक्ष नहीं होगा कभी भी. सो व्हाट इज मोक्ष? व्हेन यू नो डिजायर, when you know how to distribute the earth, and when you do it in the dharmic style. So you have a responsibility. Our responsibility, my father has given me all this. No, my father was not there. Mera father, when I was 4 years old, my father died. So my education, what I am today, is made by my brother only. So all that I have to give to my brother only first. Mera wife came later. Understood? So I have a dependency to my brother. Father से dependency नहीं है मुझे. Understood? So I have to consider different factors. मेरा environment, मेरा opportunity, मेरा skill, मैं skill कौन दिया मुझे, वो भी देखना है. Did I supported by my brother or my wife for getting education? किसने दिया था मुझे, वो सोच के थोड़ा पोर्शन देना पड़ता है. So balancing is life. कभी भी balancing is life. Good question. And all these have to come from your childhood. Pregnancy से आना है. This is my book on pregnancy. Pregnancy care के बारे में मेरा book है. Okay? Ayurveda style in pregnancy. उसके बाद age 3 to grade 3. Last time somebody asked me my grandma child care शिक्षा गुरुकुलम. मैं नहीं पूछा था. हाँ वही. Okay. So in this grandma child care शिक्षा गुरुकुलम 26 chapters है उसमें. एक बुक नहीं बना सकते क्योंकि ये बड़ा है, इसलिए ABCDEFGHIJK अप टू Z, ईच चैप्टर का हेडिंग A, एम्बिशियस बिगिनिंग, ऐसा दिया. एम्बिशियस बिगिनिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, फ्यूचरिस्टिक गाइड, ABCDEFG हो गया. हार्मोनाइजिंग इनोवेशन, जक्सोपोजिंग नॉलेज इन लर्निंग. 3-2-1 वर्ल्ड के बारे में भी बोला था लास्ट टाइम. 3-2-1 वर्ल्ड इज थर्ड डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी. 21st सेंचुरी 100 इयर्स में एजुकेशन के बारे में नहीं बोलना है. सो टुडे पीपल आर नॉट टाइनी टॉट्स, पीपल आर टेक टॉट्स. सो पूरा टेक्नोलॉजी मालूम है उसको. सो इसलिए माई बुक टॉक्स अबाउट हाउ नॉट टाइनी टॉट्स, टेक टॉट्स हैव टू बी टॉट. टेक्नोलॉजी उसके हाथ में है. सो यू हैव टू डील दम केयरफुली. ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरा यू हैव टू टीच दम हाउ टू यूज इट. ओके, सो दिस इज MNOPQRS TUVWXYZ. अप टू Z तक यू हैव गॉट exploring yes with zeal, the 3-2-1 world. A world पे how do you make education so compatible to the environment? So what my value system 10 years back is not my value system today. Sanatanam is always changing with the time. Nitya Nutanam Chirapuratanam. My value system is old, but practically today is how to use it. Yes. That is the ability we must share with our children. Thank you, sir. Yeah. Some more questions? सर, कुरुक्षेत्र युद्ध के अंदर तो आपसे भाइयों का ही झगड़ा हुआ था. तो जो सर कह रहे थे कि भाई छोटा सा तेल मांगने वाली जो इनकी बात थी, सरसों के तेल वाली, तो हो सकता है कि वो चीजें तो सनातन हैं और आगे तक रहेंगी. भाइयों का झगड़ा कभी खत्म थोड़ी हो सकता है. Definitely झगड़ा किसके साथ होता है? When you have relationship, when you have dealing, when you have business, when you have friction, when you have action. But it is not, उसका मतलब वो नहीं है मैं झगड़ा नहीं करेंगे.
बट बात करके कन्विंस करके वी विल गो अहेड विथ टुगेदर विथ पीपल। सर उस समय भी कन्विंस हो सकता था, लेकिन आपस में वो कन्विंस हुआ ही नहीं और युद्ध ही हुआ। दैट इज सामने बहुत बड़ा एग्जांपल है। वो युद्ध किसके लिए हुआ है? लोकानाम उपकाराय, फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। इट इज नॉट भाई भाई के साथ भाई नहीं है, दैट इज बिटवीन किंग एंड किंग। सी रामा वेंट टू फॉरेस्ट। रामा किस लिए गया फॉरेस्ट पे? नॉट बिकॉज फादर टोल्ड। इफ फादर इज टेलिंग, वाइफ इज टेलिंग डोंट गो, whom to listen? Father is telling go to forest, wife is telling don't go, whom to listen? Whom to listen? You have to listen to wife. But king is telling, you have to listen to king. So Bharata ने नहीं बोला, it is the king who told. So don't consider मेरा भाई बहन वो relationship, don't compare with Mahabharata, don't compare with Ramayana. That is power and position. Assume Bharata ने कुछ बोला राम को, ये नहीं सुना, तो tomorrow Ram becomes king, nobody will listen to him. Yes, sir. So it is important you should know the position and power. See, even my wife is sick, I will go and sit in the hospital. But when Prime Minister's wife is sick, he cannot go and sit in the hospital. उसको बहुत सारे काम है क्योंकि वो दूसरा सीट पे बैठ रहा है। अंडरस्टूड? सो पावर पोजीशन इज मोर इंपॉर्टेंट। दैट इज बिकॉज सही क्वेश्चन पूछा आपने। धर्म में आप हियर टू कंपेयर स्वधर्मा, मेरा धर्म मेरे लिए, कुटुंब धर्मा, माय फैमिली धर्मा, उसके बाद मेरा प्रोफेशनल धर्मा, एंड थर्ड धर्मा माय सोसाइटी धर्मा। मैं सोसाइटी बड़ा बड़ा करके मेरा स्टेट धर्मा, मेरा नेशनल धर्मा, उसके बाद इंटरनेशनल धर्म। मेरा वसुदैव कुटुंबकम वो टाइम पे आता है ओनली व्हेन माय नेबर्स आर गुड विथ मी। मेरा नेबर्स ठीक नहीं है तो माय नेशनल धर्मा बिकम प्रोमिनेंट, आई विल फाइट वॉर विद अदर्स। Understood? So it has to grow from smaller to bigger. So when the big dharma is there, I will surrender. मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, दैट डजंट मीन आई विल प्ले म्यूजिक इन द हाउस। व्हेन माय वाइफ सेज स्टॉप द म्यूजिक, नो आई लव म्यूजिक बोल के नहीं बोल सकता है, बिकॉज आई हैव टू लिसन। तो वो टाइम पे आई हैव टू पुट द ईयर ड्रॉप एंड देन लिसन टू माय म्यूजिक। सो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कभी भी करना पड़ता है। सो धर्मा इज वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, इन फ्रंट ऑफ हुम, for whom you are doing, in front of whom, for whom you are doing, वो भी मैटर है। किसके साथ कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कब कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, किसके सामने कर रहा हूं, वो पूरा देख के धर्म डिफिनेशन अलग अलग होता है। थैंक यू परमेश जी, बहुत बहुत अपना ईमेल आईडी जरूर शेयर कर देंगे सर तक कि उनको। मेरा नंबर तो है डॉक्टर टीपीएस, मेरा नाम तो DrTPS, टीचर्स पेरेंट्स स्टूडेंट्स है, TPS। ओके, नंबर इज ऑल्सो देयर 950 मेरा नंबर 950203875 950203875। नहीं तो यूट्यूब पे जाओ, मेरा नंबर हर एक यूट्यूब वीडियो के नीचे लिखा है मेरा नंबर। नेक्स्ट वन, मेरा वेबसाइट भी है डॉक्टर TP शशिकुमार, पूरा DrTP Shashikummar @gmail.com, विदाउट गैप, विदाउट डॉट। DrTP SASIKUMAR, SASHI नहीं है, SHI नहीं है, SASI सिंपल। DrTP SASIKUMAR @gmail.com मेरा ईमेल है। DrTPS-शिक्षा SHIKSHA.in, दैट्स माय वेबसाइट। गूगल मैप में जाके डॉक्टर TPS टाइप करो, आपको 3 घर दिखता, उसमें मेरा वेबसाइट का लिंक भी रहता है। DrTPS 3 घर है, एक केरला में, एक हैदराबाद, केरला में 2 है, एक हैदराबाद में 1 है। किसी, ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड, व्हेनेवर यू वांट टू कम टू केरला, कम स्टे इन माय हाउस फ्री ऑफ कॉस्ट। खाना भी
फ्री, रहना भी फ्री है. ओके, यू कैन कम. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. 200-year-old घर है. एक साथ मिलके मेक ए टीम एंड देन कम. आई विल बी अवेलेबल टू यू. मैं घूमते ही रहता हूं, बट कोई भी आने के लिए एक 10 आदमी आ रहा हूं बोले तो मैं आके उधर रहेंगे. 2 दिन पहले आपको पूरा बंदोबस्त होगा. एयर कंडीशन 5 स्टार नहीं है, 2nd क्लास स्लीपर का जैसा स्लीपर मिलेगा आपको. ओके, you can, but you can look at my घर कैसे है देखना है तो लास्ट में एक प्रोग्राम हुआ है, वो पूरा ज्ञानम बोल का मेरा घर का नाम ज्ञानम, JNAANAM. ज्ञानम का मतलब नॉलेज. बट वो ज्ञानम नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरा फादर जानकी, मदर जानकी नारायण, फादर जानकी नारायण मेंटरिंग एट ज्ञानम. Okay, Janaki Narayan mentoring. Father and mother's name is given and that's a house available. Nanam DrTPS टाइप करके देखो YouTube में, आपको 200 वीडियोस दिखता. उधर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब आपको मालूम होगा. बहुत लोग आते, बहुत लोग आके मेरे साथ 10 दिन करके जाते हैं. वी एंजॉय. आपका केरल का एक विलेज कैसा है वो देखना है तो आ जाओ. यू कैन एंजॉय द केरला विलेज. यस सर, हम लोग आएंगे जरूर. मोस्ट वेलकम. ठीक है सर, तपोश्यामः. अत्यंत ही प्रेरक और तेजस्वी बोधन के साथ आपने हम सबका मार्गदर्शन किया और हमारे सभी प्रतिभागी इतने उत्साहित हैं कि आपको त्यक्तुमेव न इच्छन्ति, आपको सुनना ही चाह रहे हैं. इस तरह आपका अत्यंत प्रेरणात्मक, ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ. इस अवसर पर मैं अपने प्रतिभागियों के पक्ष से और अपने केंद्र के पक्ष से, अपने विश्वविद्यालय के पक्ष से, अपनी केंद्र की प्रमुख प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैम के पक्ष से और अपनी सह संयोजिका डॉक्टर पिंकी मलिक मैम के पक्ष से और सभी प्रतिभागियों के पक्ष से सर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, प्रणाम करते हैं सर. और आगे भी इसी तरह मार्गदर्शन बना रहे. हम लोग जरूर आपको, आपका दर्शन आपके यहाँ आके करेंगे एक बार. बहुत बहुत कल का लेक्चर का वीडियो ऑलरेडी आई पुट ऑन माय यूट्यूब. डे फॉरेस्ट डे 27th का यूट्यूब पे रखा है ऑलरेडी इधर. ओके सर. मेरा नंबर ऐसा होगा है, आज का लेक्चर के लिए आप देखना पड़ेगा 250129 YYMMDD 25/2025 MM01DD 29 आज का डेट. सो लास्ट वीडियो 25/0127 यूट्यूब पे जाके DrTPS. शांति पाठ कर लें सभी लोग. थैंक यू सो मच. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्